Good morning, students. This is your computer class, and today we will continue our chapter number 5, creating the bulleted list. In this class, we will continue with the concept of creating the bulleted list. How we can create a bulleted list? First of all, we have to learn about the bulleted list. Okay? What is bulleted list? Bulleted list क्या होती है? See. A bulleted list is a typed list in which the separate paragraphs are highlighted upon by putting a symbol in front of them. See, bulleted list क्या होती है? ये एक ऐसी टाइप्ड लिस्ट होती है जो सेपरेट पैराग्राफ्स में होती है और एक सिंबल के थ्रू हाईलाइटेड होती है. जैसे कि ये फ्लाइंग डेस्क, सनग्लासेस, सैंडविचेस, जूस, इसके आगे ये आपका सिंबल है. इसकी हेल्प से आपका ये पैराग्राफ जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हो रहे हैं और ये हाईलाइटेड है विद द सिंबल, तो ये हमारी बुलेटेड लिस्ट होती है. ओके, द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इन द बुलेटेड लिस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सी, इन द बुलेटेड लिस्ट द ऑर्डर ऑफ आइटम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. मतलब अगर आप सैंडविचेस ऊपर लिख दो, फ्लाइंग डेस्क नीचे, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट ये इम्पॉर्टेंट है कि ये डिफरेंट पैराग्राफ्स में है और एक सिंबल हाईलाइटेड है. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट द बुलेटेड लिस्ट. हम इस एक्टिविटी की हेल्प से ये देखेंगे कि आप कैसे बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो. सी, क्लिक ऑन द होम टैब. फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब, देन क्लिक ऑन द बुलेट्स arrowhead. सी, दिस इज द सिंबल ऑफ बुलेट्स arrowhead. This is the arrowhead. You have to click on it. When you click on it, this dialog box will appear. Then select any bullet type which you want to apply in your text. Okay, that bullet will appear at the cursor point position. Type the text and press the enter key. See, आपने जो भी इसमें से सिलेक्ट करा है वो आपका कर्सर की पोजीशन पे आ जाएगा और फिर आप जैसे जैसे उस पर टाइप करते जाओगे आपका वो अपीयर होता जाएगा. देन जैसे ही आपने अपना एक पैराग्राफ टाइप कर लिया, उसके आगे जैसे फ्लाइंग डेस्क, इसके आगे आपको और कुछ टाइप नहीं करना है. देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की. जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आपका सेम सिंबल अपीयर हो जाएगा. द नेक्स्ट बुलेटेड पॉइंट विल अपीयर. ओके, इन दिस वे द बुलेटेड लिस्ट इज मेड. ओके, इस तरह से आप अपनी पूरी लिस्ट बना सकते हैं. ओके, now creating the numbered list. What is the numbered list? A numbered list is a typed list which has separate paragraphs and a sequence number in front of them. See, जैसे आपकी बुलेटेड लिस्ट थी, उसमें आपका जो भी टाइप टेक्स्ट होता था वो सेपरेट पैराग्राफ्स में एक सिंबल की हेल्प से हाईलाइट होता था. वैसे नंबर्ड लिस्ट में क्या होता है, इसमें भी सेपरेट पैराग्राफ्स की हेल्प से वो अलग अलग होता है बट एक सीक्वेंस नंबर में होता है. मतलब उसको आप नंबरिंग दे देते हो 1 2 3 4. इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है बट बुलेटेड में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है. ओके, द ऑर्डरिंग ऑफ द आइटम्स इन अ नंबर्ड लिस्ट इज इम्पॉर्टेंट. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, now we will learn the steps how we can create a numbered list. See, click on the numbering arrowhead. See, this is the bulleted arrowhead and this is the numbering arrowhead. You have to click on this. When you click on this dialog box will appear. Then select any type which you want to apply in your text. See, if you select this will appear like this. Okay? Click on the numbering arrowhead, select the numbering type. Then the rest of the steps to create a numbered list are same as mentioned in the bulleted list. See, आपने इसको सिलेक्ट करा, देन आपका ये अपीयर हो गया. देन जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते जाएंगे वो आपका नेक्स्ट आता जाएगा. ओके, नाउ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज ओवर. वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस. ओके, वर्कशीट 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. A font is an alignment of text, the design of characters that you type, a game or a program. So क्या होगा, the design of characters that you type. Okay, in justify alignment the text aligns with the respect to the. justify alignment में क्या होता है, both left as well as right margin in evenly order. Okay, in center alignment the text aligns to the
center of the left and right margins. Bulleted list is a typed list in which separate paragraphs are highlighted by putting a symbol in front of them. Okay, so आप इस पे टिक कर देंगे. To change the font color, you will click on, आप कौन से पे क्लिक करेंगे? Font color बटन पे. Okay. Now true false. By changing the font style, you can make the text to look bold, italic or underlined. True. This button represents the bold style. True. This italic, no, this is the underline button. False. A numbered list is used when numbering of the item is important. True. This button is used to create numbered list. False. ये तो आपका bulleted list का है. The this button represents the left margin. True. This represents the right alignment. False. Center alignment है ये तो. Okay. Now the fill-ups. By changing the dash, the text can be made bigger or smaller in size as required. आप क्या चेंज करके कर सकते हो? Font size. So ये आपका 1 नंबर हो जाएगा. In the dash list, the ordering of items is important. Numbered list. So ये 2. This button represents a bold style. So ये 3. This button represents the italic. So ये 4. This is the justify alignment button. तो ये आपका 5. The bigger the font size, the larger the text. Okay. Now match the column. Formatting. Way to improve appearance of the text. Alignment. Aligning with relation to margin. Bulleted list. A list in which paragraphs are highlighted by putting a symbol in front of them. Numbered list. A list in which separate paragraphs have sequence number in front of them. Left alignment. Aligning the text with relation to the left margin. Now answer in one word and sentences. What is the design of characters that you type known as font? Which groups contain font size and paragraph alignment options respectively? कौन से group में होते हैं? Paragraph group में. Okay. Which alignment will you use to align the type text evenly from the left as well as right margin? कौन सा? Justified alignment. Okay. What is the difference between bullets and numbering? This we will do from the PDF. Which tab has the formatting options that you have learned in this chapter? कौन से tab में होता है आपका सारा? Home tab में. Okay. Now worksheet 6 we will do from the PDF. Okay. See. Read this chapter and complete all these exercises in your book and do worksheet portion in your copies and learn them properly. And if you're getting any problem, then message me. Okay. Worksheet 5. Question number 4. What is the difference between bullets and numbering? A bullet list is a type list in which the separate paragraphs are highlighted upon by putting a symbol in front of them, while a numbered list is a type list which has separate paragraphs and a sequence number in front of them. Okay. 6 is worksheet 6. First question. What do you understand by term formatting? Formatting is the way to improve the appearance of the text to make it look beautiful, arranged and systematic. Now, what is a font and what is the importance of changing the font size? So, a font is the design of the characters which you type. Importance of font sizes: by changing the font size of particular words or lines in a text, you can emphasize on them. It gives different appearance to the text. Okay. Next is, when is numbering applied to paragraphs? Numbering is applied when the numbering of the items is important in the paragraph. Okay. When you have to arrange the numbers in a sequenced order. Okay. Add this line also in this question. When are bullets applied to paragraphs? Bullets is applied to paragraph when we want to highlight some point by putting a symbol in front of them. Okay. What do you mean by left alignment? Left alignment is the option which helps us to align a type text to the left margin of the page border. What do you mean by justified alignment? Justified alignment is the option which helps us to align our type text to the left as well as the right margins, creating evenly aligned text. Okay, so you have to do all these questions
worksheet 5 and worksheet 6 in your copies and learn them properly. Okay, thank you and have a nice day.